In our last class, we discussed about the male reproductive system. Today, I am going to discuss female reproductive system. So, the female reproductive system in human consists of a pair of ovary. Remember, pair of ovary, pair of oviduct, single uterus, single cervix, single vagina, then external genitalia. And the accessory gland consists of two mammary glands. Now come to the ovary. The ovary is the primary female sex organ. So what are the primary sex organs? Primary sex organs are those organs which are directly involved in the formation of gamete. So in case of male, testes produces the sperm or the male gametes, and in case of female, the ovaries produces the egg or female gametes. So they are the primary sex organs. But the all other organs like fallopian tube, cervix, vagina, uterus, in case of male, the accessory ducts, the accessory glands, all these are secondary sex organs. Okay. Now, besides producing the ovum or egg or female gamete, the ovary also produces several steroidal hormones which are called ovarian hormones. Now, each ovary is attached to, remember, both pelvic wall and uterus by ligament, and each ovary is covered by epithelium. Okay, and suppose this is the section of ovary, this outer covering is epithelium. Okay, and the inner part is known as stroma, and the stroma is differentiated into two portions. The outer portion is cortex and the central portion is medulla. Okay, now come to the fallopian tube or oviduct. So here you can see these are the two ovaries, and here you can see this is the ligament. Okay, this portion is the ligament, which at one side it is connected with the uterus. This is the uterus, and on the dorsal body wall it is attached. Okay, now come to the fallopian tube or oviduct. The fallopian tube has three parts. The anterior part is called infundibula, which is funnel shaped, and it has finger like projections called fibrae. Okay, now the next middle part is ampulla, then the posterior part is isthmus. Now what is the function of this infundibula? As you can see that it has finger like projections. It helps in capturing the egg that is released from the ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसको ये कैप्चर करता है. देन द एग पासेस थ्रू द एम्पुला, एंड इन द एम्पुला द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, and after fertilization the development of the embryo takes place in the isthmus. Okay, so this is about your fallopian tube. Now come to the uterus. Now this uterus is a pear shaped structure. This structure up to this is uterus. This uterus, the body of uterus is known as uterine fundus, and there is a cavity, it is known as uterine cavity. Now coming to the wall of the uterine wall consists of three layers. The outermost layer is called perimetrium, which is protective. Then highly muscular layer is present, middle layer, that is myometrium, and then innermost layer, this layer is endometrium. This is glandular layer, this is called endometrium. Now it is followed by, the uterus is followed by a narrow channel that is known as cervix. This is cervix, and this is called cervical canal, through which the cervix is opened into the vagina. Vagina is a bit wider space. So now in the vagina and the cervical canal together constitute the birth canal.
Okay, very important. Cervical canal and vagina together constitute the birth canal, and this cervical canal and vagina helps in parturition or childbirth. Okay, the uterus is also known as womb, that you must know. Now come to the external genitalia. External genitalia means the part of the female reproductive system that is present outside the abdominal cavity. So it consists of, the external genitalia consists of a spongy cushion like portion. Okay, and this is called mons pubis, which contains the pubic hairs. Okay, now inner to this mons pubis, two fleshy folds are present, which are larger in size. They are called labia majora. Then inner to this, two small fleshy folds are there, that is labia minora. Okay, now at the junction of the labia majora and labia minora, there is a small finger like projection that is called clitoris. Okay, often this vagina is covered by a membrane that is known as hymen. Okay, and this hymen is often considered to be the proof of virginity, but actually it is not a reliable indicator of virginity. Okay, so this is all about the structure of female reproductive system. Now coming to the accessory glands. The accessory gland is mammary gland. So the mammary gland is attached to the ribs. You can see this is the rib bones are attached here, and these are the muscles between the ribs, and the mammary gland is held with the help of the pectoralis major muscle. Okay, now coming to the detailed structure of the mammary gland. Each mammary gland consists of 15 to 20 lobes. You can see here are the lobes. These lobes are known as mammary lobes. Each lobe has many cells that is called mammary alveolus. ये देखो छोटा छोटा चैम्बर है, छोटा छोटा sac like structure like as it is present in case of your lungs. So they are known as mammary alveolus. Now this mammary alveolus, so suppose this is the alveoli, this is one cell, it secretes the milk, and this milk is stored in the lumen of the alveoli. alveoli के lumen में ये store होता है. Then these milks are passes through the mammary duct. ये देखो ये mammary duct के through आता है. Then many mammary ducts are open into a space that is known as ampulla. Okay, that is known as ampulla, and ampulla, many such ampulla are open into lactiferous duct, and these lactiferous ducts are accumulated in the nipple. Actually this lactiferous duct stores the milk, and when the baby sucks the nipple, the milk ejects out. So this is all about the mammary gland. Now coming to the events of reproductive system, human reproductive system, the event involves gametogenesis. The first event is the formation of or the production of the gamete, that is gametogenesis. Now let us discuss the process of gametogenesis. Let me show you the diagram. Directly I am going to the diagram. Okay, so when you take the section of seminiferous tubule, suppose this is seminiferous tubule. In the seminiferous tubule, many cells are present,
and these cells are known as spermatogonial cells. Spermatogonia or spermatogonial cells. So this spermatogonia at puberty, जब puberty आती है, ये जो spermatogonia, it starts dividing mitotically. The ploid, remember the ploidy of spermatogonia is 2n, या फिर आप 46 लिख सकते हो because this is human body. So the spermatogonia undergoes mitosis and differentiation and grows in its size. ये है spermatogonium. ये देखो यहाँ पर differentiate हुआ है and it has grown in size, and now this structure is known as primary spermatocyte. तो यहाँ पर कोई meiotic division नहीं हुआ, तो what should be the ploidy of this cell? It is also 2n, remember. Then this undergoes first meiosis. ये क्या होता है? First meiosis होता है, and you know that in first meiosis the cell divides to form two haploid cells. Okay, so if it is 46, then it will, each of these will be 23 chromosome. They will be having 23 chromosome, and these cells are known as secondary spermatocyte. Now the secondary spermatocyte undergoes second meiotic division, and they form 4 cells. All of them are haploid, having 23 number of chromosomes, and they are known as spermatids. Now these spermatids undergoes differentiation by a process known as spermiogenesis. So by this spermiogenesis it develops into sperms. So यहाँ पर आप देख सकते हो the cells are circular, but here the sperm has been developed. It has head, tail and middle piece. Okay. Now come to the some important points related to this. Okay. So as I have told you, the spermatogenesis starts with spermatogonia. Okay. Then spermatogonia differentiates to form primary spermatocyte. Then primary spermatocyte undergoes first meiotic division to form secondary spermatocyte, which is also N. This is N, this is N, this is 2N, and this is 2N. Okay. Now these spermatids are produced by the division of the secondary spermatocytes. So these are also N. And then these spermatids undergo differentiation to form the spermatozoa or sperms, and the process of differentiation is called spermiogenesis. Now after spermiogenesis, अभी आपका sperm produce हो गए. Now here in this diagram you can see that these are the spermatogonial cells. Now some of the spermatogonial cells have undergone division and they have developed into primary spermatocytes. Now the spermatocytes, some of the primary spermatocytes are developed into secondary spermatocyte. The secondary spermatocyte becomes the spermatids. Okay, and you can see that the spermatids, the spermatids has entered into the Sertoli cell. So these are the Sertoli cells. They enter into the Sertoli cell to get the nourishment, and after differentiation the sperms are released from the seminiferous tubule by a process called spermation. This is very very important. Sertoli cell spermiogenesis के बाद जो sperm head Sertoli cell के अंदर होता है for nourishment which helps in differentiation, वो finally release हो जाता है from the seminiferous tubule, and that is known as spermiation. Okay, now let us see the hormonal control of
स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, तो ओके, the spermatogenesis starts at the age of puberty. Okay, so how it starts? It starts with the release of a hormone from the hypothalamus. So the hypothalamus, it releases a hormone that is GnRH. This is a gonadotropin releasing hormone. This is gonadotropin releasing hormone. Okay, so this, when the level of GnRH increases, it stimulates the anterior pituitary. Okay, and this anterior pituitary secretes the two gonadotropin hormones. Gonadotropin hormones, that is FSH and LH, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Now what is the function of these two hormones? The LH acts on the Leydig cell. Leydig cell क्या है? If you remember, Leydig cells are the cells present in between the seminiferous. ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल्स होते हैं उसको कहा जाता है लेडिक सेल. सो LH एक्ट्स ऑन लेडिक सेल एंड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन. Synthesis or secretion of androgen, and this androgen stimulates spermatogenesis. Okay, now if in the exam the hormonal control is asked, you can give schematically as I have given here. So now what happens to the FSH? The FSH acts on the Sertoli cell. Sertoli cells, and it releases some factor. It secretes some factor which helps in the process of spermatogenesis. And how it helps in spermatogenesis? By helping in, rather I can say this is not spermatogenesis. More appropriately, it helps in spermiogenesis. So spermiogenesis is a part of spermatogenesis only. So more appropriately, it helps in spermiogenesis. So this is all about the hormonal control of spermatogenesis. So you can write this in the exam in this form, in schematic form. Okay. Now the sperm has been formed. Now let us discuss the structure of sperm. Okay. The human sperm, the human sperm is differentiated into three parts. Okay, the major three parts are head, then middle piece and tail. In between the head and the middle piece, there is a constriction known as neck. Okay, and the sperm is a single cell. Remember, the sperm is a single cell, so it has plasma membrane. It has plasma membrane. This is the plasma membrane. Okay, the outer membrane is the plasma membrane, and which covers the whole body of the sperm. And the head, this is the head. You can see there is a very big nucleus is present in the head, and it has no or very less cytoplasm. Okay, and at the anterior end of the head, there is a cape like structure which is known as acrosome.
and this acrosome helps in penetration of the sperm into the ovum. This acrosome is filled with an enzyme, that is hydrolytic enzyme. This acrosome filled with hydrolytic enzyme which helps in fertilization or penetration of the ovum. Okay, and the middle piece, you can see in the middle piece some cylindrical structures are there. So these are the spiral mitochondria. These are spiral mitochondria. So the middle piece is rich in mitochondria which produces energy for the movement of tail. Okay, and this movement of tail is very essential for the motility of the sperm. So this energy comes from the mitochondria present in the middle piece. Now this figure you have to remember, the human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus. एक coitus में जो सीमेन रिलीज होता है उस सीमेन में कितने स्पर्म्स होते हैं? 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स. ठीक है, और जिसमें से एक हेल्दी पर्सन नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी. ये फिगर आपको याद रखना है कि 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और 40 उसमें से 40%, 60% में से 40% का विगरस मोटिलिटी होना चाहिए. ओके, नाउ द फ्लूइड that contains the sperm that is released during the coitus is known as semen. Now what is the difference between semen and the seminal plasma? Okay, seminal plasma is the fluid that is released from the seminal vesicle which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. But when this seminal plasma along with the sperm, it constitutes the semen. Very important. Okay, and now so this is all about the spermatogenesis and the structure of sperm. Then let us come to oogenesis. Okay, so this is bit complicated. Listen carefully. The oogenesis takes place in ovary. So oogenesis takes place in ovary. Now oogenesis, spermatogenesis कब शुरू हो रहा था? प्यूबर्टी में. But oogenesis starts in the embryonic stage. In the embryonic stage. Okay, so embryonic stage में ही आपका oogonia प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत सारे oogonia बन जाते हैं. ठीक है, now this oogonia, let me go to the previous page where all these things are written so that it will be easier for you. अच्छा, ये पोर्शन आप देखो यहाँ से. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तभी आपका मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल, जिसको हम oogonia बोलते हैं, वो बन जाता है. ठीक है, एंड जितना oogonia बनना है दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द फिटल स्टेज ओनली. आफ्टर चाइल्ड बर्थ नो मोर oogonia आर एडेड, और कोई oogonia उसमें ऐड नहीं होता. ठीक है,
and these oogonia are developed into the primary oocyte. How? आप स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़े थे? स्पर्मेटोगोनिया develops into primary spermatocyte, ठीक है, और जिनका प्लॉइडी 2n 2n, इसमें क्या होता था? सिर्फ ग्रोथ होता था, डिफ्रेंशिएशन एंड ग्रोथ होता था. बट इसमें क्या होता है? व्हाट हैपेंस हियर? द ओगोनियम it undergoes differentiation and mitosis and develops into primary oocyte. Now this primary oocyte starts meiosis 1. It enters into meiosis 1. तो meiosis 1 में एंट्री कर गया, मतलब प्राइमरी oocyte का डिवीजन शुरू हो गया. ओके, बट दिस meiosis 1 का फेजेस, सब फेजेस क्या है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1. तो ये meiosis 1 तो शुरू होता है, लेकिन प्रोफेज 1 में आकर रुक जाता है. इट इज सीजेस एट प्रोफेज 1. ठीक है, तो इसका मतलब आपका प्राइमरी oocyte का, जो प्राइमरी oocyte में शुरू हो गया meiosis, and a female child borns with primary oocyte के साथ पैदा होता है. इसका मतलब प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी क्या होगा? विल इट बी 2n और n? ये 2n ही होगा. व्हाई नॉट n? meiosis तो शुरू हो गया, meiosis शुरू हुआ लेकिन ख़त्म तो नहीं हुआ, सो इसीलिए ये 2n ही रहेगा. ठीक है, एंड आफ्टर बार्थ ये जो प्राइमरी oocyte होता है, आई थिंक अप टू दिस इट इज़ क्लियर. अभी आपका प्राइमरी oocyte, सपोज दिस इज प्राइमरी oocyte, it is enclosed by a layer of cells and this structure is known as primary follicle. Okay, तो एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उसमें millions of such primary follicles are there. लेकिन after birth gradually the primary follicle starts degenerating, and when the child reaches the puberty, जब तक puberty में पहुंचती है, तब इसमें कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं? ओनली 60 to 80,000 फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी. एक एक ओवरी में इतने ही आपके प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं. देन व्हेन इट रीचेस द प्यूबर्टी में जब आता है, द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स. इसके चारों तरफ और लेयर्स हो जाते हैं, एंड उसको कहा जाता है सेकेंडरी follicle. That is called secondary follicle. Okay, then this secondary follicle, इसके चारों तरफ और सेल बनते हैं, इसमें कैविटी बन जाता है, and that becomes your tertiary follicles and then gradually becomes Graafian follicles. ठीक है, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स जब तक बनता है तब तक इसमें क्या बन जाता है? सेकेंडरी oocyte. Now when this reaches the, अभी हम नीचे वाले डायग्राम में जाएंगे. सो हियर यू कैन सी oogonia. आप देखो माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन होकर क्या बना? प्राइमरी oocyte. अभी प्राइमरी oocyte में फास्ट meiosis शुरू हुआ. ठीक है, फास्ट meiosis शुरू होकर वो कहाँ रुक गया था? प्रोफेज 1, सीजेस एट प्रोफेज 1 में रुक गया. अभी आफ्टर बर्थ when it enters puberty, जब प्यूबर्टी में जाता है तब क्या होता है? द प्रोफेज 1 से वो रिलीज हो जाता है और फास्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीटेड.
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? प्यूबर्टी में कंप्लीट होता है। एंड कंप्लीट होने के बाद ये जो डिवीजन होता है अनइक्वल डिवीजन होता है। एक छोटा सेल होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, एक बड़ा सेल होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। एंड दिस सेकेंडरी oocyte इज कंटेन्ड इन द, किसके अंदर होता है ये? टर्शियरी फॉलिकल। और धीरे धीरे वो क्या बनता है? ग्राफियन फॉलिकल। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte it undergoes second meiosis। ठीक है, ये सेकेंड मियोसिस भी कंप्लीट नहीं होता। ये कहाँ आके रुक जाता है? अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में आके रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मेटाफेज 2 में आपका सेकेंडरी oocyte है। सो नाउ दिस सेकेंडरी oocyte अच्छा, अभी सेकेंडरी oocyte किसके अंदर है? ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है। दिस इज सेकेंडरी oocyte, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इस स्टेज में ये ओवारी से रिलीज होता है, दैट इज ओवुलेशन होता है। ओवारी से इसी स्टेज में, दैट इज सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होता है। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओवम कभी रिलीज नहीं होता। आप देखो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, देखो इन दिस डायग्राम यू कैन सी, देखो आपका कैसे पहले था आपका, दिस आर प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, ये देखो प्राइमरी फॉलिकल्स, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स, देन ग्राफियन फॉलिकल्स। एंड जब ओवुलेशन हो रहा है, ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी oocyte, जिसका प्लॉइडी है N, जिसमें मियोसिस शुरू तो हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, एंड अभी हम देखेंगे ये सेकेंडरी oocyte से ओवम कब बनता है। ठीक है, ये ओवुलेशन से क्या रिलीज हुआ आपका? द सेकेंडरी oocyte। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte, इसके चारों तरफ आपका डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स आर देयर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब इसमें एक स्पर्म पेनिट्रेट करने लगता है, जब स्पर्म इसमें पेनिट्रेट करता है तब क्या होता है? इसमें जो आकर आपका मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया था, नाउ मेटाफेज 2 इज़ कम्प्लीटेड। अभी मेटाफेज 2 कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद क्या होता है? इसका जो न्यूक्लियस, आपका जो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस था, दैट न्यूक्लियस नाउ डिवाइड्स अनइक्वली इनटू 2 सेल्स। ठीक है, तो जो छोटा होता है वो क्या होता है? सेकेंड पोलर बॉडी, और जो बड़ा वाला होता है दैट इज द ओवम। ठीक है, सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओनली द सेकेंडरी oocyte completes meiotic division and develops into ovum. ठीक है, so this is all about the gametogenesis. Now let us come to the structure of graphian follicle. अभी हम ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर थोड़ा देखेंगे, it is very very important. Okay, suppose say this is graphian follicle. Okay, and I have told you that there is secondary oocyte in it. Okay, the secondary oocyte is surrounded by a layer of cell that forms a membrane is called zona pellucida. Okay, so the secondary oocyte releases when the zona graphian follicles is rupture. जब रप्चर होता है, जोना पेलुसिडा के साथ आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। इसके चारों तरफ और कुछ सेल्स होते हैं जिसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा।
ठीक है। और इसका 2 थिक्का होते हैं, ठीक है, आउटर थिक्का एंड इनर थिक्का, और यहाँ पर एक कैविटी होता है जिसको कहा जाता है एंट्रम, फ्लूइड फील्ड कैविटी, दैट इज कॉल्ड एंट्रम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट अस डू इट टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह करते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ो, समझो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप और यू राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट में आप लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर आप क्योंकि अक्सर देखो आपको oogenesis एंड spermatogenesis में कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सो दैट शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। आपको कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दूंगी। पिछले चैप्टर का क्वेश्चन कुछ बच्चों ने अभी तक ख़त्म नहीं किया, एंड मैंने 79 पेज का PDF दिया लेकिन आपने खोल के देखा भी नहीं। उसमें से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये 79 पेज का क्वेश्चन है। इट इज़ नॉट ऑल क्वेश्चंस, दिस कंटेन्स बोथ क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने क्वेश्चन एंड आंसर दोनों दिया है उसमें, ताकि आपको आसान रहे कि आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन यू मैच इट विथ द आंसर। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आंसर देख लिया, नहीं, क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करो, देन you see the answer. Still then if you have any doubts you are most welcome. आप कमेंट में जिस वीडियो का क्वेश्चन है उसी वीडियो के कमेंट में आप उसका क्वेश्चन लिख दो, आपको जो भी डाउट है लिख दो, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दो। बट डोंट वेस्ट योर टाइम चिल्ड्रन, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये दिन कैसे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने दिया है उसको प्रैक्टिस करो, चैप्टर रिलेटेड मैंने सेपरेट करके दिया है आपको, और हर एक चैप्टर का एक एक PDF मैं दे रही हूँ आपको, उस PDF से आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो, डोंट नेग्लेक्ट, ओके। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट, ओके। थैंक यू सो मच।